Good morning, everyone. My name is Shubham. I am explaining SST Geography Chapter 4 Industries. My chapter है आज का इंडस्ट्री। इंडस्ट्री तो आपको पता होगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनीज इंडस्ट्री कहलाती है। तो आज हम यही चैप्टर समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Have you ever been thought the fact that your notes book in your writing will come after a long process manufacturing started? Like part of a tree, it cut down, transported in the pulp mill. Then the wood of tree was processed and converted into wood pulp. The wood pulp was mixed with chemical and finally changed into paper by machine. This paper found its way the press where ink made from chemical. पेपर ट्रीज से बनता है। इनकी भी एक ट्रीज की प्रजाति आती है, उनसे बनता है। और पेन की इंक केमिकल से was used to print the line of the page. The page were the bound in the form of a notebook package and sent off the market for sale. इस तरीके से इसको मार्केट में भेजा जाता है। This is your hand second activity of manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग समझेंगे हम। चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट। हम कुछ खास उत्पादन मतलब कुछ खास सामानों को मिलाकर यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको उत्पादन करना बोलते हैं। ऑफ मोर वैल्यूएबल ऑफ पीपल, जो कि बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है हमारे लिए। एज यू हैव सीन पल्प वेयर चेंज इनटू पेपर इन अ नोटबुक। पहले एक पल्प को पेपर में चेंज किया जाता है, जिस पेपर से नोटबुक बनाई जाती है। रिप्रेजेंट द टू स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यह है टू स्टेज मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद द पेपर मेड पल्प क्लोथ्स मेड फ्रॉम कॉटन हैव वैल्यू एडिट ऑफ देम स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग की। कोई चीज़ हो गई, कॉटन हो गया, उससे हम कपड़े बनाएंगे और उसे सेल करेंगे। इस तरह की इंडस्ट्रीज। In this way, finished product has more valuable utility than the raw material that is made from industry. Referred to an economical activity. Economical activity होती है concerned with production of goods मतलब सामान, extraction of minerals or provision of service. Thus have iron and steel industry. Iron and steel industry product of goods. कोल माइनिंग इंडस्ट्री हो गई, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल हो गया, इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइडर हो गई। इस तरह की इंडस्ट्री। क्लासिफाई इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल साइज और ओवनशिप से हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं इंडस्ट्री को। रॉ मटेरियल इंडस्ट्री बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड depending on the type of raw material that use. Agro-based industry, material, food processing, vegetation, cotton, textile. Dairy product and leather industry example of agro-based industry and mineral-based industry example है। And primary industry use mineral ore and their raw material the product this industry feed other industry. Iron made from iron ore in the product of mineral-based industry। ये प्रोडक्ट है आयरन और उसका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का। दिस इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ नंबर of other products as heavy machine building material and railway coaching ports. Marine-based industry use products from the and ocean as raw material industry processing seafood or manufacturing fish oil. Some example forest-based industry। ये forest-based industry के example। अब हम देख लेंगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री के एग्जांपल। यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस अ रॉ मटेरियल द इंडस्ट्री एसोसिएटेड विथ फॉरेस्ट एंड पल्प एंड पेपर फर्मेशियल furniture and building. Size it refer amount of capital invested, number of people employed, the volume of production based size industry can be classified। कोई भी साइज पर डिपेंड करता है कि क्या चीज बना रहे हो और किसकी प्रोडक्शन हो रही है, कितने लोग लग रहे हैं, उस हिसाब से
इंटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री दो होती है, जैसे कॉटन और हाउस होल्डर इंडस्ट्री आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर्टिफिशियल बास्केट वीविंग पॉटरी एंड अदर हैंडक्राफ्ट जो भी हैंडक्राफ्ट मटेरियल होता है एग्जाम्पल ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज स्मॉल scale industry uses lesser amount of capital and technology as compared to large scale industry that produce large volume direct investment of capital higher. The technology used superior in large scale industry or small scale production of automobile and heavy machinery and large scale industry. Ownership industry can be classified into private sector, state owned or public sector, joint sector और कॉर्पोरेटिव सेक्टर। फोर टाइप होता है, उसे फोर टाइप में क्लासीफाई करा हुआ है। एक तो प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट एक अपनी खुद की संस्था चलाती है, एक स्टेट और पब्लिक सेक्टर तो सरकार चलाती है, जो स्टेट ओन जो उस स्टेट की सरकार चलाती है, ये एक इंडिविजुअल ग्रुप चलाता है। जॉइंट सेक्टर जिसमें एक अलग लीडर होता है और वो चलाता है, इंडिविजुअल के साथ एक ग्रुप होता है। कॉर्पोरेटिव सेक्टर भी इसी में आता है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन and operated by individual of a group individual. The public sector industry are owned and operated by the government such as Hindustan Aeronautic Limited. ये एग्जांपल है इसका इंडस्ट्री। And Steel Authority of India Limited joint sector industry are owned and operated by the state and individual of a group individual. बोला ना मैंने अभी। Maruti Udyog Limited is an example of joint sector industry. Cooperative sector industry are owned by operative the produce of supplier. उसमें सप्लायर होते हैं रॉ मटेरियल्स के और वर्कर लगते हैं दोनों। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड सुधा डेयरी सक्सेसफुल स्टोर ऑफ अ कोऑपरेटिव वेंचर सेक्टर अफेक्टेड लोकेटेड इन इंडिया। देखो किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए ये सब चीजें चाहिए होती है। अगर आपके पास है तो आप भी एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वन फैक्टर अफेक्टेड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। द फैक्टर अफेक्टेड द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री आर द अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल लैंड वाटर लेबर power capital transport and market industry are situated where some or allow these factors easily available. Sometimes the government provide incentive like subsidies, power, lower transport cost and other infrastructure structure so that industry may be located in backward area. Industries often lead development and growth of those cities. Industry system. An industry system consists of input, process and output. The important of raw material, labor and the process includes a wide range of activity that convert the raw material into finished product. The output or the end and the income come earned cotton, labor, factory, transport cost. Processing includes spinning wheel, dyeing, printing, the out, shirt, wearing. इंडस्ट्री रीजन्स पढ़ेंगे अब हम। सो आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं इसके। इंडस्ट्री रीजन्स emerge when a number of industries located close to each other share the benefit of their closeness. Major industry regions of the world are ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में है। ये तो नॉर्थ अमेरिका में है, वेस्टर्न में है, सेंट्रल यूरोप में है और ईस्टर्न यूरोप में भी है और ईस्टर्न एशिया में भी है। एशिया में तो काफी सारी इंडस्ट्रीज। ये आप देख सकते हो वर्ल्ड मैप कि वर्ल्ड में इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है। इंडस्ट्री रीजन्स ट्रेंड बी लोकेटेड इन द टेम्परेचर एरिया नियर सी
spot, especially near coal field. देखो, इंडस्ट्री जहाँ पे उसके रॉ मटेरियल मिल जाएंगे, वहीं वो इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। या जहाँ पे जरूरत हो, इंडस्ट्री रिटर्न सही है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, सी के पास है वो डिपेंड करता है। स्पेशली नियर कोल फील्ड में ये देखा जाता है। इंडिया हैज सेवरल इंडस्ट्री रीजन्स लाइक मुंबई, पुणे, ओ क्लस्टर, बेंगलोर, तमिलनाडु रीजन्स, हगली रीजन्स, अहमदाबाद, बड़ोदरा रीजन्स, कोटापुर इंडस्ट्री बेल्ट, विश्वविद्यालय बेल्ट, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, इन जगह पे बहुत सारे रीजन से इंडस्ट्री के रीजन्स इन द कोलकम, थिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ये सब एग्जांपल है इसके। इंडस्ट्री डिजास्टर, इन इंडस्ट्री एक्सीडेंट डिजास्टर mainly occur due to technical failure of irresponsible handling of hazardous material. One of the worst industry disasters of all time occurred in Bhopal on 3 December 1984 around 30 am. It was a technological accident in which high poisonous metal associated mixed along with hydrogen and other carbohydrates. The official death toll was 3,598 in 1950, 1989,000 who survive still suffer from one of many elements like blindness, impairing immunity system, gastro disaster, etc. In Andhra on 23 December 2005 due to glass well, what go jogging, China, 242 people died, 9,000 were injured and 64,000 evacuated. Many people died because they were unable to run after the explosion. वो लोग एक्सप्लोजन के बाद नहीं भागे इसलिए वो मर गए। They who could not escape in times, वो समय पर नहीं भाग पाए। बर्न, उनकी आंखें जल गई, स्किन जल गई, लंग्स खराब हो गए, पूरे गैसेस भर गए उनमें। रिस्क रिड्यूसिंग मेजर, density of population, resident area should be separated far away from the industry area. People staying vicinity of industry should be aware of the storage of toxic hazardous substance. हमारी गवर्नमेंट को भी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सही पॉइंट है ये। एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट ऑफ केस एक्सीडेंट ऑक्योर. Fire warming and fighting system should be improved. Storage capital of toxic substance should be limited, सही है। Population dispersion qualities in the industry should be improved. क्योंकि आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे घटनाएं हो रही है और कई इंडस्ट्री की वजह से है, तो इंडस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए। Distribution of major industry, the world major industry are the iron and steel industry, the textile industry and the information technology industry. The iron and steel and textile industry are the older industry, while information technology is an emerging industry. The country in which iron and steel industry is located on Germany, USA, China, Japan and Russia. यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज concentrated in India, Hong Kong, South Korea, Japan, and Tajwa, the major hub of information of technology industry, and the Silicon Valley of Central California of Bengaluru regions of India. Iron and steel industry, like other iron and steel industry, to comprise the various input, process, and output. This is feeder industry would product are used as a raw material, and other industry that input industry include raw materials such as iron and coal, limestone हो गया, limestone along with labor capital, city and other infrastructure.
The process of converting iron and into steel involved many stages. The raw material put in last furnace where it undergoes smelting. This refining the output obtained in steel which may be used by the other industry as a raw material. So last. Steel is tough and it can easily be shaped, cut, or made into wire. Special alloy of steel can be made by adding small amount of other metal such as aluminium, nickel, copper alloy give steel usually hardness, toughness, and ability to resist rust. Steel is often called backbone of modern industry. Almost everything we use in ether made आयरन और स्टील बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे डेली यूज़ के has been made with tool and a machinery that is metal ship train truck and auto and made largely of steel even the safety pen and needle you use are made from steel pipeline transport oil minerals main with steel equipment farm machinery and mostly steel large buildings have steel framework. Before 1800 AD, and steel industry was located where raw material running water were easily available later than ideal. Located for the industry was near coal field close the canal and railway after 1950 iron steel industry began to be located on the large area of the flat land near seaport times because this time the work had become to be imported from overseas. In India, iron and steel industry है developing taking. इंडिया में तो बहुत ज़्यादा जानी जाती है या फिर से वर्ल्ड मेजर आयरन और प्रोडक्शन एरियाज आ गए हैं तो आप इन्हें देख सकते हो आप इन्हें अपनी नोटबुक में भी बना सकते हो Advantage of raw material cheap labor transport area marketing all the important steel producing such as situation regions spread over four states West Bengal Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Border, Batswana, and Vijayanagar, Karnataka, Visakhapatnam in Andhra Pradesh, Salem, Andhra Pradesh, Salem in Tamil Nadu, and other important steel center utilizing local resource. अब आ गया जमशेदपुर Before 1947, there was only one iron and steel plant in the country. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड इसको शॉर्ट में टिस्को बोला जाता है इट वॉज प्राइवेटली ओन आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट took the initiative and set up several iron and steel plants. Tisco was started in 1707 Sakshi near the confluence of the rivers Subhanakar and Kharkai, Jharkhand. Later, Sarchi were renamed as Jamshedpur. Geographical Jamshedpur is the most convenient situation iron and steel center in a country. ये देख सकते हो मैप Sakshi was choosing to set up the steel plant for several reasons. This place was only 32 kilometers away from Kali Mata station on the Bangalore-Nagpur railway line. It was close iron ore coal manufacturing deposit as well as the Kolkata which provided a large market. Risco get coal, Jharia, coalfield iron ore, limestone, dolomite and manganese from Odisha and Chhattisgarh. The Kharkai-Subhanakha River ensures sufficient water supply. Government interior provide adequate capital of later development. In Jamshedpur, several other industry plants were set up in Jasper. The product chemical part of agriculture equipment, machinery, cable and wire. The development of iron and steel industry
open the door rapid industry development. India almost sector of industry having on the iron and steel industry their basic infrastructure. The iron and steel industry consists of large integrated steel plants, often mini steel mills काफी जगह पाए जाते हैं इंडस्ट्रीज के. It also includes secondary producer rolling mill, ancient industry. Pittsburgh बताऊंगा अब मैं आपको. It is an important steel city of an United States of America. अच्छा, तो यह बहुत important steel city है अमेरिका की. The steel industry Pittsburgh enjoy located in advantage some of raw materials such as coal available locally. वहाँ पे कोल लोकली अवेलेबल हो जाता है जो कि रॉ मटेरियल. Will the iron ore come from the iron mines about 1,500 किलोमीटर from Pittsburgh. फिर आयरन और वगैरह भी बहुत कुछ मिलता है उधर. वो भी 500-1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग की दूरी से. Between these mines, Pittsburgh is one of the world's best route shipping cheaply. The famous Great Lake waterway train carry of the ore on the Great Lake of Pittsburgh area. The Ohi, the Monongahela, and Allegheny River provide adequate water supply. Today, very few of large steel mills are in Pittsburgh itself. They are located in the valley of Monongahela, Ohio River below, and finished steel is transported to the market. Both land and water is a name. The Pittsburgh and has many factors other than steel mill that is used as their raw material to make many different products. Railroad equipment, heavy machinery and rails. तो हमारा चैप्टर हो चुका है अब फिनिश. अब ये आ गई इसकी एक्सरसाइज. तो देखते हैं अब एक्सरसाइज क्या है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज मीन बाय द टर्म इंडस्ट्री. व्हाट इज मीन बाय द टर्म इंडस्ट्री. ओके, तो हम देखते हैं टर्म इंडस्ट्री को. इसके आंसर्स इसके आंसर इसके आंसर इसके आंसर हमारे पास आंसर की अभी के लिए अवेलेबल नहीं है. आप हमारी वेबसाइट पे देख लेना इसकी आंसर की. मैं डाल दूंगा. surstudyvideos.com है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो. और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब शुभम स्टडी वीडियोस. आप चाहो तो इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो. मैं इसके आंसर डाल दूंगा. यह रूम मटेरियल मुझे पता है. कॉटन आ जाएगा इधर और इधर स्टील आ जाएगा. एंड प्रोडक्ट भी पता है मुझे. शर्ट आ जाएगा और सेफ्टी पिन आ जाएगा. टेरिटरी एक्टिविटी एग्रो बेस इंडस्ट्री. कोऑपरेटिव भी पता है मुझे. कॉटन आ जाएगा. डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे. ये सब चीज़ ये एक्टिविटी है, इन्हें आपको करना है. और क्वेश्चन आंसर मैंने बता ही दिया आपको. ये एक्टिविटी है हाउ टू इंडिटिव अ लोकेटेड एस्टेब्लिश्ड एन इंडस्ट्री. या आप करके देख सकते हो अगर आप चाहो तो. बस आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब शुभम स्टडी वीडियोस. अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हो. वहाँ पे आपको मिल जाएंगी. थैंक्स फॉर